Assalamu alaikum grade 3. Today is our 5th lecture and today we'll discuss some more details about Tux Paint. So let's start. Today we'll discuss drawing tools in details. Some of the drawing tools in the Tux Paint are described below. Number 1 is paint. The paint tool lets you draw stars, arrows and also freehand drawing without the help of any device through a mouse. If you hold the left mouse button and move the mouse pointer on the drawing canvas known as the center area, it will draw as you move the mouse. Release the mouse each time you finish a part of drawing. जैसे ही आप अपनी उंगली माउस के लेफ्ट बटन से हटाएंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बन जाएगा. Then on second number we have lines. The line tool let you draw straight lines. Click and hold the left mouse button and move the mouse pointer on the drawing canvas. Release the mouse to draw your lines. Same, आप जैसी अपनी उंगली हटाएंगे माउस के लेफ्ट बटन से तो आपके वो ड्राइंग का जो लाइंस है वो बन जाएंगे. Then on third we have shapes. This tool lets you draw some simple filled and unfilled shapes. Select a shape from the selector on the right. You can choose a circle, square, oval, anything you want. Click to select the center. आप ये जो आपका ड्राइंग कैनवस है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे and to start drawing click and hold the left mouse button and drag it to the size you want. आप जिस साइज में let's suppose आपने सर्कल ड्रॉ करना है, आपने जिस साइज का वो बनाना है उस हिसाब से आप माउस को रिलीज कर दें. Move the mouse around to rotate the shape and click to fix it. आप शेप को रोटेट कर सकते हैं 90 degrees to the left or right, anything you want. You can do it with it. On fourth we have text. The text tool let you add text and numbers in the drawing area. आपका जो drawing area है canvas जैसे कहते हैं. The steps are number 1. Click the text tool जो आपके tool bar के अंदर टूल है टेक्स्ट का. अ ब्लिंकिंग लाइन अपेयर्स ऑन द कैनवस जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. इफ द लाइन डज नॉट अपेयर क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग कैनवस. अगर आपका लाइन जो आपके ब्लिंकिंग जो लाइंस है वो आपके यहाँ पे कैनवस पे अपेयर ना हो, आप कहीं पे भी ये सेंटर ऑफ जो आपका मेन स्क्रीन है ड्राइंग कैनवस इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा. देन Also select a text style from the selector on the right. आप text style change कर सकते हैं, चाहे आपको टाइम न्यू रोमन चाहिए, जिस तरह का स्टाइल भी आपको चाहिए आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं. टाइप द टेक्स्ट जो आपका जिस तरह मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट टाइप किया है आप कोई भी आप टेक्स्ट टाइप कर दें. प्रेस द एंटर की टू मूव द कर्सर डाउन वन लाइन और प्रेस टैब टू मूव इट टू द राइट. देन ऑन फिफ्थ नंबर वी हैव मैजिक, also known as special effects. The magic tool is actually a set of special tools. Select one of the magic effects from the selector on the right. Then depending on the tool you can either click and drag around the picture and or simply click the picture once to apply the effect. Magic effects में आपके मुख्तलिफ effects होते हैं, वो आप built in वहाँ पे होते हैं, आप select कर सकते हैं magic tools के through. Then on 6th number we have eraser. This tool helps you erase or remove any portion of a drawing. Click and hold the left mouse button and move the mouse pointer on the drawing canvas to erase or remove the whole part of the drawing or a specific part. आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एक ड्राइंग बनाई है, आप उसमें आपको कुछ करेक्शन करनी है तो आप या स्पेसिफिक एक पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, एज अ होल ड्राइंग को आप इरेज कर सकते हैं. Then we have some other tools like undo, redo, new, save, quit, print. We'll discuss it now. There are some other tools for various functions like undo, redo, to save and to open etc. So undo and redo. Undo और redo क्या करता है, एक जो है आपका एक्शन जो है अनडेट करता है, दूसरा उसके रिवर्स होता है. So by clicking undo will cancel the last drawing action. Clicking redo button will redo the drawing action you just undid with the undo button. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ड्राइंग बनाई है जिसमें आपने गलती से एक लाइन एक्स्ट्रा लगा दिया है, अब आप उसको अनडू करना चाहते हैं, मतलब एक लाइन रिमूव करना चाहते हैं, आप अनडू का बटन क्लिक करेंगे
तो आपका वो एक्स्ट्रा लाइन इरेज हो जाएगा। अब आपको वापस वही लाइन दोबारा चाहिए तो आप दोबारा रीडू क्लिक करेंगे, वो रिवर्स हो जाएगा, दोबारा वो लाइन ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली अनडू सब्ट्रैक्शन की तरह काम करता है और रीडू एडिशन की तरह काम करता है इन सिंपल टर्म्स। You just undid or okay, note you can undo or redo more than once. आप multiple time undo और redo कर सकते हैं। Then we have another tool that is called new. Clicking the new button will start a new drawing. A dialog box will appear where you may choose to start a new picture using a solid background color or using a starter image. See below. This is the new tool that can be used to open a new TuxPaint file. You will first be asked whether you really want to do this. आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू पेंट मतलब एग्जिस्टिंग आपके एक पेंट आप कर रहे हैं, आप न्यू करना चाहते हैं, तो आपसे वो पूछेंगे यू विल फर्स्ट बी आस्क्ड वेदर यू रियली वांट टू डू दिस, सो यू हैव टू सबमिट इट यस. देन वी हैव सेव टूल. दिस सेव्स योर करंट पिक्चर. फिर इसमें दो ऑप्शंस हैं. इफ़ यू हैवंट सेव्ड इट बिफोर, it will create a new entry in the list of saved images. For example, if you haven't saved an image that you are drawing, वो पहले से मौजूद ना हो आपके कंप्यूटर में, तो वो एज अ न्यू एंट्री सेव होगा. और अगर वो पिक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, आपने सेव किया है, मतलब आपने सिंपल उसको ओपन किया हो कमांड के थ्रू, तो वो पिक्चर जब आप सेव करेंगे तो वो आपसे ये डायलॉग बॉक्स में पूछेगा. यू विल फर्स्ट be asked whether you want to save over the old version or create a new entry. मतलब वो आपसे पूछेगा कि आपने जो पिछला पेंट किया उसके ऊपर आपने ओवरराइट करना है कि नहीं, आपने एक नया फोल्डर बनाना है या नया फाइल बनाना है, क्रिएट करना है. तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. या तो आप यस कर देंगे या नो, सेव अ न्यू फाइल, सिंपल. Then we have open tool. This shows you a list of all the pictures you have saved. ये आपके जितनी भी सेव पिक्चर्स होंगे वो आपको शो करेगा ओपन टूल के थ्रू. जस्ट डबल क्लिक ऑन द पिक्चर टू ओपन इट. जो पिक्चर आप चाहते हैं कि टक्सपेंट में ओपन हो जाए, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें. Then we have print and quit tools. प्रिंट ज़ाहिर बात है, आप एक चीज़ की प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट टूल यूज़ करते हैं. The print tool is used to print the picture using a printer. अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड हो तो उसके थ्रू आप ये प्रिंट टूल यूज़ कर सकते हैं. The print tool is used to print the picture using a printer. On clicking this button, you will get a printed copy of your drawing in hard form. पेपर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा जो आपने ड्रॉ किया. Then quit tool. The quit option is used to close the TuxPaint. So this was all about today's lecture. I hope it was easy for you guys to understand about TuxPaint. It is similar to your Microsoft Paint, but there are some slight features added to TuxPaint. So till then, take care. We'll see you inshallah in the coming videos. Thank you.